Welcome once again, dear students. In this video, we are going to learn about decimal. How it works with numbers and what are the properties of decimal number. In this video, we will learn more about decimals. So without wasting a moment, let's start. So in previous classes, in class 4th, you have learned little bit about decimal. Basically, what is decimal? The whole number and decimal part is separated by a point. This is called decimal point. Suppose I am having 6 rupees 75 paisa. How can I write in numbers? 6 rupees 75 paisa. I'm going to write like this. Then this is whole number. On left side of decimal, this is whole number. On right side of this decimal, this is fractional part. So we can express such kind of amount in decimals, right? Well, let's take another example. Suppose we want 3 whole buns and some fraction of the 4 buns. 1, 2, 3, 4 buns are there, and we want 3 whole buns. जो बन हम खाते हैं वही हमने 3 बन लिए हैं, तो हमको 3 बंस पूरे चाहिए और 4th बंस का कुछ पार्ट चाहिए, ठीक है? तो हाउ डू वी एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन फॉर्म एज वेल एज इन डेसिमल फॉर्म, राइट? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, एंड आई एम गोइंग टू पार्ट ऑफ दिस 4th वन. The whole bun is divided into 10 equal parts. We take 2 parts of 10 divisions, right? तो हम इसके 10 पार्ट्स हमने किए, उसमें से हम केवल 2 पार्ट्स को ले रहे हैं. तो ना हमारे पास कितने जो है, इसको अगर हम नंबर्स में एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे? इन ए फ्रैक्शन फॉर्म वी एक्सप्रेस 2/10, राइट? आप जानते हैं कि अगर हमने इसके 10 पार्ट्स किए हैं, उसमें 2 पार्ट ले रहे हैं, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2/10. We have taken 2 parts out of 10. In decimal form, we express this as 0.2, right? Now, the 4 buns are represented like this. Whole part is 3 and the decimal part is 0.2. So, we need decimal for this purpose, this kind of purpose, right? Now, how can we read this number? Suppose this is a number. This is 12.247. After decimal, we will read like this, not like 247, right? तो जब भी हमको डेसिमल की बात का नंबर पढ़ना है, उसको हम सेपरेटली बोलेंगे, ठीक है? 12.247. अब देखिए, we talk about this number with place value system. It is a number 32.1264. What about the place value of these numbers? You know the place value of 32. It is ones place, it is tens place, right? We can say about the 32 because it is whole number. It is ones place and it is tens place. But what about this 1? What about this 2 and 6 and 4? After decimal, it is tens. First place is 10th place. 10th, that means it is 1/10. It is 2/100th place. 6/1000th place. And fourth one is 4/10,000. तो जो डेसिमल के जो बाद होता है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है. तो जो पहला पार्ट होगा वो 1/10 10th प्लेस होगा. सेकंड जो प्लेस होगा वो 100th प्लेस होगी. थर्ड जो प्लेस होगी वो 1000th प्लेस होगी. और उसके बाद मोर देन 10,000 एंड सो ऑन, राइट? सपोज दिस इज नंबर. व्हेन वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिस डेसिमल, द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स go to increase, okay? And if you go towards right of the decimal, the value of the numbers go to decrease. तो जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, यानी कि आपकी जो यहाँ 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 है. 4 की 40 है, ठीक है? अगर कोई नंबर और होगा तो उसकी 300 होगी.
तो क्या हो रही, वैल्यूज आपकी बढ़ रही हैं। बट जब जैसे आप डेसिमल के बाद जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1/10 है अभी फिलहाल, फिर इसकी वैल्यू क्या है 2/100, यानी कि आपके पार्ट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं 3/1000 लाइक दिस। तो आपको जो नंबर है वो छोटा होता जा रहा है, यानी कि इससे नंबर पीछे को जैसे जैसे जाएंगे आप नंबर छोटा होता जाएगा, और यहाँ लेफ्ट साइड को जब मूव करेंगे तो नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। Well, through this place value chart, we can understand what are the particular place values of particular numbers, right? It is our decimal point. Left of this decimal, we have ones place, tens place, hundreds place, thousands place, and 10,000s place, right? After decimal, it is fractional part of fractional part, and we can say it is decimal part, right? After decimal, just next to decimal, we get tenth place, hundredth place, and thousandth place, right? तो जो भी नंबर होगा इस इन प्लेसों के अकॉर्डिंग उसकी हम प्लेस वैल्यू जो है लिखेंगे। Now question arises, how can we write this number in expanded form? तो expanded form आपको जो आपके होल नंबर्स हैं उनको आपने लिखना सीख लिया है, तो अब आप डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यू नो इट इज होल नंबर, राइट? तो इसको आप कैसे लिखते हैं? 200 इट इज इन हंड्रेड्स प्लेस, इट इज इन टेंस प्लेस, 5 इज इन वंस प्लेस, राइट? नाउ फ्रॉम हेयर we'll write the place value 4. It is in tenth place, so the value of 4 is 4/10. It is in hundredth place, the value of 5 is 5/100. It is in thousandth place, the value of 6 is 6/1000. So it is the expanded form of this number. In this way you can write many numbers. Second question, how can we express this into fractional form, right? So let's start. It is whole number, then we can write like same 45 plus, it is in 10th place, so the value of 5 is 5/10, and the value of 1 is 1/100 because it is in 100th place. Now we can add by assuming this denominator as 1, we will get 100 as LCM. Now we can solve this. 100 ja 100 into 45, 10 ja 10 into 5, 100 1 ja 1 into 1 is 1, right? Now we can multiply. It is 4500, it is 50, it is 1/100. Now we can add, it is 44,551/100. So in this way you can express this number into fraction. तो देखिए इसका शॉर्टेस्ट वे क्या है, आपने देखा अगर आप इतनी प्रोसेस नहीं करेंगे तो सीधे सीधे भी आप कर सकते हैं। 45.51 जितने डिजिट्स आपके हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो आपके 100 इसकी 100 प्लेस है इसकी, तो इसको क्या करेंगे हम 4-5 डेसिमल्स को हटा देंगे इसका और डिवाइड कर देंगे 100 से। जितने यहाँ पर प्लेसेस होंगी उतने ही जीरो भी होने चाहिए, ठीक है, उतने ही जीरो भी आपके होने चाहिए। और 2 प्ले आपके डेसिमल का 2 डिजिट्स है, दैट मीन्स आपका जो नंबर है 100th प्लेस तक है, तो आप 100 से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये सीधे भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। How can we convert this into fraction? How many places are there after decimal? It is till to 1000th place, right? There are 1, 2, 3, 10th place, 100th place, and 1000th place. Now we will remove this decimal and we will divide this by 1000. It is cancelled now. Now we can express this in fractional form
we will get, after dividing this number by 100, 25 whole 23 upon 100. So it is your answer after changing into fractional form. Suppose this is a question, I want to write this in decimal form, right? It is 6 ones, 6 tenths, 2 hundredths, 3 thousandths. तो सबसे पहला क्या है, 6 वंस, यानी कि वंस है तो वंस प्लेस में आएगा वंस. उसके बाद स्टार्ट हो गया टेंथ्स, तो टेंथ में डेसिमल लग जाएगा. तो आपका 6 टेंथ प्लेस में है, 2 हंड्रेड्थ प्लेस में है और 3 थाउजेंथ प्लेस में है. तो इस नंबर को हम जो है डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, इस तरह से आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं. Now we learn about like and unlike decimals. तो जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, we know that fraction having the same denominators are called like fraction, and fraction having different denominators are called unlike fraction. Right? Similarly, the decimals having the same numbers of decimal place are called like decimals, such as 4.3, 43.4, 19.6. These are called like fraction because these all numbers have same digits after decimal. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है. ठीक है, तो सब में डेसिमल का इक्वल डिजिट है, तो वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे. अगर जिनमें आफ्टर डेसिमल अलग अलग नंबर्स होंगे तो वो अनलाइक होंगे. सपोज 5.31, 4.531, 4.5, 6.789. 2 आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर वो एक ही डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं. तो ये आपस में क्या होंगे, अनलाइक जो है डेसिमल नंबर होंगे. और ये लाइक होंगे जहाँ पर डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. अगेन यू कैन सी इन दिस चार्ट हेयर 22.32 and 256.76. You can see the same number of decimal place. And the second example 289.2 and 31.12. There are different number of decimal places. Well, this is example. Convert the following unlike decimal into like decimals. 8.3, 54.29 and 6.475. तो आपसे कहा गया कि इनको आप जो है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए. Well, in this example, you can see how many places after decimal, how many digits are after decimals, right? तो यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है. तो अगर हम इनको लाइक बनाना है तो इनके आप जो है डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए. तो यहाँ पर डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3. तो हमने मैक्सिमम 3 तक जो है डिजिट बढ़ा देने हैं. तो यहाँ पर एक डिजिट कम है तो एक जीरो बढ़ा देंगे. और यहाँ पर ये डिजिट 3 है आफ्टर डेसिमल, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे. तो अब देखिए डेसिमल के बाद सब में इक्वल डिजिट हो गई. तो ये डिजिट बढ़ाने से आपका इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, ये वैल्यू वही रहती है. ठीक है, बट ये क्या हो गया, अब लाइक फ्रैक्शन, सॉरी लाइक डेसिमल्स हो गए. नाउ द टर्न ऑफ कंपेयरिंग डेसिमल्स. हाउ कैन वी decide that which one is the greater decimal number and which is the lowest decimal numbers. तो दो नंबर्स में हम कैसे छोटा और बड़ा पता करेंगे, चलिए देखते हैं. So in this example here whole number part is equal. ठीक है, होल नंबर पार्ट दोनों में इक्वल है, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे. we will compare only the decimal apart. अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ इक्वल है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इससे भी हमको पता नहीं चलेगा कौन सा बड़ा है करके. ठीक है, बोथ आर सेम. एंड इन 10th 100th प्लेस वी सी इट इज 2, इट इज 5, देन 2 इज लेस देन 5. राइट, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये बड़ा होगा. जिसका जो भी पार्ट बड़ा होगा पहले कंपेयर करते हुए चलेंगे. जितने भी डिजिट तक कंपेयर करेंगे तो जो जिस पार्ट में डिफरेंस हमको पता चलेगा वही पार्ट जो है बड़ा या छोटा होगा. ठीक है, so we can say this number is less than this number, right?
तो पहले हमने क्या करना है, पहले होल पार्ट चेक करना है, अगर वो इक्वल है, अगर वहाँ डिफरेंस है तो वहीं से पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, जिस नंबर में बड़ी डिजिट आएगी वही बड़ा होगा। उसके बाद डेसिमल पार्ट के बाद चेक करेंगे कि कौन सा जो है डिजिट बड़ा है। 3 and 3 are same and 2 and 5 it is greater number than this, so this number is greater than this number. If we know how we can find the greater and the lowest part, lowest number, तो इसको अगर आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे जो है ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर को चेक करेंगे। तो आप देखिए इसका पहला नंबर देखिए 3, 3 और 2, यहाँ छोटा है, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन, यहाँ उसके बाद 4 है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 0.243 है। इन दोनों में ये तो सबसे बड़ा डिजिट है, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो बड़ा डिजिट है, इसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, सेकंड पार्ट को चेक करिए, 2 यहाँ है, ये 4 है, यानी कि इसके बाद कौन सा बड़ा होगा, 0.324। उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, 0.342, और सबसे बड़ा कौन सा है, 0.432। इस तरह से इसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। Well, in next video we'll learn the additions and subtraction of decimals. Till then, take care and have a nice day.